Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and doing well at your home. Today in this video, we are going to discuss Standard 7, Subject Social Science and the new chapter, that is chapter number 8, Delhi during the medieval period. Okay, and this is part 1, or we can say video number 1. Now, as far as the title of this chapter is concerned, Delhi during the medieval age. So, what is medieval age or period? So, it is middle. Okay, medieval means middle. So, we have to learn now the situation of Delhi in the middle age or middle period of Indian history. Up to now, we have already completed the Rajput era and all that thing, okay, in the previous chapters. Now, from here, we have to learn about Delhi. And during the medieval period means what was the situation of Delhi in the middle age or middle period, that we have to learn in this chapter. So without wasting time, let us start. First of all, remember one thing, that as far as middle age is concerned, Delhi and Delhi Sultanate plays a very important role in Indian history. Okay, this is very important and you cannot ignore Delhi Sultanate. And from here we can say that Muslim religion rises up. जो मुस्लिम रिलीजियन था और मुस्लिम जो भी रूल्स था वो यहाँ से ऑलमोस्ट राइज होना स्टार्ट हो गया. सो वी हैव टू लर्न द सेम थिंग हियर. दिल्ली ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. Bhagwati Ben went to a tour of North India. One character is given to us here, that is Bhagwati Ben, and she went to tour on the North India. North India means now it should very much clear to you that upside, okay, north, south. So here, like Delhi, situated Jammu Kashmir, Delhi, all that places are situated in North India. She was interested in history and so she noted down information about the rulers of the Delhi in her diary. And what she did, so she was interested in the history. She liked the subject history very much and she noted down the information. Which information she noted down in her diary? So rulers of Delhi means how many rulers and who ruled on the Delhi. So she noted that information in her diary. This two diary was read out in the classroom. What was read out is below. Two diary means the diary. Anyone used the diary during the tour and noted down the information, so that is called tour diary, and we'll have to learn the same tour diary and the information which is given to you in the present chapter. So first of all, we'll have to learn slave or Ghulam dynasty. Slave, meaning of slave is Ghulam. Okay, किसी का गुलाम मतलब किसी के अंडर में रूल करना. एंड डायनेस्टी यू नो वेरी वेल. नाउ वी कैन से एज और पीरियड, और कोई एक जो वंश है, सो दैट वी हैव टू लर्न. सो दैट इज गुलाम और स्लेव. फ्रॉम हियर ओनली मीन्स फ्रॉम द टाइटल ओनली वी कम टू नो दैट दिस dynasty was ruled by any gulam or slave. That is why it is considered as slave or gulam dynasty. So let us start that who established. Now remember one thing, as far as each and every dynasty or rule is concerned, first of all you have to remember the name of establisher. Who established that dynasty, that you have to learn. Then capital of that particular dynasty and time, and how many kings were there, that you have to compulsory remember. The Delhi Sultanate was founded in the beginning of the 13th century, that is 1206 CE. Now from here also the question is there, that from which time we have to consider Delhi during the medieval period. So Delhi Sultanate was founded in beginning of the 13th century. So from here also the blank will be there, that Delhi Sultanate was found in the beginning of the blank century. So 13th century के beginning में, मतलब starting of 13th century, and the time is 1206 CE. After the death of Ghori, now you know very well here, because in the previous chapter we have already discussed Sahabuddin Ghori, okay, Sahabuddin Muhammad Ghori. One of his loyal slaves became the commander and established the control over the throne of Delhi. Now, for just information, here Ghori, okay, he belonged to Ghazni place, okay, which is situated in Arab, right. Now what happened, that he came to India to collect the money, and it is saying कि जो मोहम्मद घोरी है, टोटल उसने 17 टाइम्स इंडिया के ऊपर अटैक किया था.
ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 4 कि 16th टाइम में उसने सोमनाथ का जो मंदिर है उसके ऊपर लूट चलाई थी। तो मोहम्मद घोरी जब रिटर्न हो रहा था, मतलब 17th जब अटैक करके वो रिटर्न हो रहा था अपने प्लेस गाजना में, तो उसकी वहाँ पे मर्डर किया जाता है। ओके, तो जहाँ पे उसने जो भी प्लेसेस यहाँ पे जीते हैं, द प्लेसेस विच ही कंसिडर्ड, विच ही लाइक जो जीते हैं, उसमें क्या किया कि जो अलग अलग उसके सेनापति थे, चीफ इन कमांडर, उन लोगों को उसने हैंड ओवर कर दिया। तो व्हाट हैपन दैट आफ्टर द डेथ ऑफ घोरी, मतलब घोरी के मर जाने के बाद, वन ऑफ हिज लॉयल स्लेव, स्लेव मतलब गुलाम, एंड लॉयल मतलब जो एकदम प्रामाणिक हो, वो बिकेम द कमांडर एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो लॉयल स्लेव था वो क्या करता है कि अपनी खुद की जो, मतलब अभी तो थ्रोन ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली की राजगादी खाली है, तो वहाँ पे वो अपना एक डायनेस्टी जो है वो एस्टैब्लिश करता है, एंड दैट डायनेस्टी इज slave dynasty. The slave dynasty started ruling over Delhi. So from here also it's important that how Delhi, or we can say slave dynasty, started ruling over Delhi. So after the death of Ghori, there is a requirement of like any king on the throne of Delhi. So what happened? The slave dynasty started ruling over Delhi. Though he faced many difficulties in establishing his power in India, he managed to provide a stable administration. Here he means Ghori. Okay, he had to face so many problems and difficulties in establishing his power in India. Means the aim to attack on India, that was like to establish the power, but he faced so many problems and difficulties, but still he gave the stable administration. Stable मतलब fixed, constant administration, मतलब उसने एक stable administration जो है वो इंडिया में establish कर दिया. He started the construction of a minar. Okay, his son-in-law Iltutmish, who succeeded him, completed the construction of that minar. So from here also you have to remember Iltutmish, he was the son-in-law of Muhammad Ghori, and it is believed that he was a slave of Muhammad Ghori. फिर वो जो स्लेव है उसके साथ ही अपनी बेटी का, मतलब उसकी जो डॉटर है उसके मैरिज करवा देता है, और इल्तुतमिश, हियर मीनार मीन्स कुतुब मीनार. ओके, so from here the question is that who started the construction of Qutub Minar? So Muhammad Ghori, and after his death his son-in-law Iltutmish completed the construction of that minar. This minar, which came to be known as famous Qutub Minar, which is situated in New Delhi. Okay, seriously it's a very beautiful and historical place, and which is known as and famous as Qutub Minar. Earlier it was known only as Minar, then after it is called like Qutub Minar. The architectural style in which Qutub Minar was constructed is a mixture of both Hindu and Muslim styles. So it is also very important that which is the construction style of Qutub Minar. So this Qutub Minar construction architectural style of Qutub Minar was constructed, and that is a mixture of both Hindu and Muslim style. मतलब हिंदू और मुस्लिम की जो स्टाइल थी उसको मिक्स करके उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है. This place was the capital during the Sultanate age, and which was the capital? मतलब Qutub Minar, that was the capital during the place or during the time of Sultanate age, means Delhi. Okay, because this Qutub Minar is situated in Delhi, and at that time it was the capital of them. So what you have to remember first you have to remember Sahabuddin Muhammad Ghori. Then after his death he started the construction of Minar. Then what you have to remember, after his death his son-in-law, he was like slave of Muhammad Ghori, and he completed the work of construction work of Qutub Minar. So two blanks are there. Who started the construction work? So Ghori. And who completed? So Iltutmish. Okay, so don't get confused in it. Now here in this slide you have the picture of Qutub Minar. Okay, you can see here 5 we can say stairs are there. Okay, and it is considered as a historical monument. Historical monument is there, Qutub Minar. Earlier it was called Minar only, then after we are considering Qutub Minar. So who started the construction work? So Ghori started the construction work, and who completed it?
So Iltutmish, his son-in-law, who was the slave of Muhammad Ghori. Then after Iltutmish was also a slave in the beginning. I already told to you that in the beginning he was the slave of Muhammad Ghori. He conquered many territories in India and made them a part of the Delhi Sultanate. What he had done, he conquered मतलब जीतना, लड़ाई करना, कि बहुत सारी टेरिटरीज के ऊपर लड़ाई करके उसको जीत लिया. एंड देन आफ्टर ही मेड देम अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, और उसको किस में मतलब कनेक्ट कर दिया, तो दिल्ली सल्तनत में. सो ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. सो फ्रॉम हियर ऑल्सो द क्वेश्चन इज दैट हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. सो इल्तुतमिश वॉज द फाउंडर ऑफ slave dynasty. Why we can say slave dynasty? Because Iltutmish was a slave of Muhammad Ghori. That's why we considered him as a founder of slave dynasty. Then after his daughter Razia Sultana ascended the throne after his death in 1236 CE. Means first Ghori, then after we have to consider from here only. Iltutmish was the founder. Then after the death of Iltutmish, who came on the throne? So his daughter, his means Iltutmish's daughter Razia Sultana ascended the throne after his death in 1236 CE. Razia was the first female ruler that is considered as Sultana over the rule of Delhi. So from here also the question is that who was the first female ruler of Delhi Sultanate? So your answer is Razia Sultana. Razia was an efficient ruler. She used to dress as a man when she was in the court. Means she was a like brave ruler and she used to dress as a male when she was in the court. जब वो अपने कोर्ट में होती है तो वो कैसे क्लोथ पहनती थी? एज अ मेल जैसे ही वो क्लोथ पहनती थी. According to a historian of that time, Minhaj A. Sirat, Razia was more capable and efficient ruler than her brothers. However, being a woman, she was not accepted as a ruler. Now, one historian is there and the name of that historian is Minhaj A. Siraj. तो मिनहाज ए सिराज नाम के एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार. उन्होंने क्या बोला? रज़िया वॉज मोर कैपेबल एंड एफिशिएंट रूलर दैन हर ब्रदर्स. उसके ब्रदर की कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा कैपेबल एंड एफिशिएंट रूलर थी. बट being a woman, she was not accepted as a ruler. She was not accepted as a ruler. What was the reason? Because she was अ वुमन. वो एक वुमन थी, इसीलिए उसको रूलर के रूप में एक्सेप्ट किया नहीं गया. ऐसा किसने बोला? सो फेमस हिस्टोरियन मिनहाज ए सिराज ने बोला. नाउ से अमीर उमराव disliked Razia as a ruler. Razia's rule came to an end due to the interference of Amirs. What happened? ये जो अमीर उमराव है वो मतलब वो कॉटियर होंगे, ओके. तो उसको वो पसंद नहीं था कि रज़िया एज अ रूलर वर्क करे, तो उसने इंटरफेरेंस करना चालू किया, मतलब दखलगिरी करना चालू किया एंड उसको अपने जो क्वीन थी मतलब थ्रोन पे से उसको हटा दिया. देयर वाज अ कंप्लीट डिसऑर्डर इन द सल्तनत for 6 years after her death. So that is also very important. After the death of Razia Sultana, what happened? 6 years तक complete क्या रहा? Disorder. Means nobody was capable to handle the throne of Delhi. And then what is the reason? That after the death of Razia Sultana, 6 years तक दिल्ली में पूरा disorder रहा. At last, the Amir enthroned Nasiruddin, the son of Iltutmish. He ruled for 21 years. मतलब ये जो कॉटियर थे अमीर, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ओके. उसने किसको एंथ्रोन्ड किया? मतलब गादी पे से वो किया, निकाल दिया. तो नसीरुद्दीन जो किसका सन है? इल्तुतमिश. मीन्स रज़िया के बाद उसका ब्रदर आता है नसीरुद्दीन. तो उसने क्या किया कि उसको थ्रोन पे से निकाल दिया एंड जो अमीर था उसने 21 ईयर तक रूल किया. आफ्टर हीज डेथ गियासुद्दीन बलबन एसेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली. सो उसके बाद कौन आया दिल्ली की थ्रोन पे? तो गियासुद्दीन बलबन. ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर हु ब्रॉट एन एंड टू द डिसऑर्डर एंड एस्टैब्लिश पीस. सो ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर. तो जो भी डिसऑर्डर था तो उसको उसने क्लोज कर दिया, मतलब उसका एंड आ गया और फिर से क्या हुआ कि पीस मतलब शांति एस्टैब्लिश हुई. बलबन हैड बीन द वजीर ऑफ
नासिरुद्दीन फॉर 20 ईयर्स। और बलबन जो है वो क्या होता है, नसरुद्दीन का 20 ईयर्स तक वो वज़ीर बनता है, फिर उसके बाद वो थ्रोन पे आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, मोहम्मद घोरी को आपको याद रखना है, उसने पहले स्टार्ट किया, फिर उसकी डेथ के बाद इल्तुतमिश आता है। ओके, इल्तुतमिश आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश रज़िया सुल्ताना, फिर रज़िया सुल्ताना के बाद उसको एंथ्रोन किया किसने, अमीर ने, फिर वो आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, तो इल्तुतमिश मतलब नसरुद्दीन को उसने एंथ्रोन किया, फिर अमीर आया, फिर उसके बाद कौन आएगा, सो गयासुद्दीन बलबन। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। एंड बलबन वॉज अ वजीर ऑफ नासिरुद्दीन फॉर 12 ईयर्स। हमने यहाँ पे देखा कि नासिरुद्दीन है उसकी कोर्ट में, मतलब रज़िया का भाई, उसके यहाँ पे वो 20 ईयर्स तक क्या था, वजीर, और फिर वो क्या हो जाता है, किंग बन जाता है। सब्सिक्वेंटली ही रूल्ड एज अ सुल्तान फॉर 22 ईयर्स। और गयासुद्दीन बलबन वो कितने ईयर्स तक रूल करता है, सो 22 ईयर्स। हिज डिसेंडेंट्स वो वीक एंड द खिलजी डायनेस्टी एस्टैब्लिश इट्स रूल ओवर दिल्ली। एंड जो भी उसके बाद आने वाले किंग्स थे वो क्या थे, दे वर वेरी वीक, इसीलिए ये जो स्लेव डायनेस्टी है वो क्या हो गई, फिनिश हो गई, और एक न्यू डायनेस्टी स्टार्ट हुई, दैट इज खिलजी डायनेस्टी। नाउ थिंग्स टू नो, सो रज़िया सुल्ताना इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन्स एंड कॉइन्स दैट शी वॉज इल्तुतमिश डॉटर। उसने मतलब जो उसके एज में रज़िया सुल्ताना के टाइम पे जितने भी स्टोन्स और कॉइन्स बने, स्टोन्स, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन, ऑन दैट वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन दैट शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। The Kakatiya dynasty to rule over Warangal in present Andhra Pradesh. The attitude of King Rudrama Devi as a ruler of this dynasty was exactly the opposite to that of Razia Sultana. टू हिस्ट्री में हमें याद रखनी है फ्रॉम हियर रुद्रदामा देवी। ओके, उसका एटीट्यूड और रज़िया सुल्ताना का जो एटीट्यूड था वो टोटली क्या था, डिफरेंस था। इन हर इंस्क्रिप्शन सी एनग्रेव्ड हर नेम लाइक अ मैन। और उसने मतलब रज़िया सुल्ताना ने उसके जितने भी इंस्क्रिप्शंस क्रेव करवाए, एनग्रेव्ड, उसमें उसने अपने आप को क्या माना है, मतलब नेम्ड किया है एज अ मैन, नॉट एज अ वुमन। एंड देन आफ्टर सिमिलरली देयर वाज अ क्वीन दीदा हु वंस रूल्ड ओवर कश्मीर। और एक फिर से हमें लेडी जो रूलर है उसका नेम याद रखना है, दीदा, और वो कहाँ की थी, कश्मीर की थी। सी वॉज एफिशिएंटली कॉल्ड एज दीदी बाय हर सब्जेक्ट, और उसको दीदी के नाम से भी जाना जाता है। सो फॉर इन दिस वीडियो वी हैव लर्न स्लेव डायनेस्टी। सो मोहम्मद घोरी फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर, देन आफ्टर इल्तुतमिश, देन रज़िया सुल्ताना, देन न्यासुद्दीन बलबन। ओके, एंड देन आफ्टर स्लेव डायनेस्टी फिनिश हो गई, उसके बाद कौन सी चालू होने वाली है, खिलजी डायनेस्टी, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। I hope it is clear to you, but still you have any doubts, so you can write in comment box, so I'll try to solve your problems and doubts. Thank you for watching the video. Have a nice day.